Hello everyone, good morning, and I want to wish you all a happy mental health day. Today is mental health day, it's the 10th of October and the whole world is celebrating this beautiful day, and my salute and my thanks to all those practitioners who are into this field, saving lives of people and helping people. मैं उन सब प्रैक्टिशनर्स को सल्यूट करना चाहती हूँ जो मेंटल हेल्थ फील्ड के अंदर बहुत लोगों की जान बचा रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं. इट्स अ ह्यूज थिंग, ये बहुत बड़ी बात है. सो आज के दिन एक छोटा मैसेज बनता है. सो टुडे आई कम विद अ वेरी स्मॉल मैसेज, राइट, एंड अ मैसेज not only to create awareness but also for you to take action. अगर किसी को पता नहीं है तो वो एक एक्शन ले सकते हैं. ये मैसेज है कि हमें सबको अभी पता है, हम अवेयर हो गए हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, हम बहुत सीख रहे हैं उसके बारे में. वी आर encouraged to do exercises, meditation, take help, etc, 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 which is absolutely very good, and I'm thankful कि this awareness is increasing day by day. But ये जड़ जो है, there is a root cause of why there are onset of disorders, and the root cause is your decision to either take a flight or to fight. Okay, Whenever we are hit with a situation, जब भी कोई एक सिचुएशन आती है हमारे सामने जो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, जो हमारे हैंडल करने के बियॉन्ड हो जाती है, तो या तो हम उसको फाइट करते हैं बिकॉज हमारे में उतना विश्वास होता है, या हम फ्लाइट मोड लेते हैं, हम भागना चाहते हैं, राइट. सो व्हेनेवर वी आर हिट विद अ सिचुएशन, either we want to fight it because we have the faith to fight it, or we take a flight mode, we want to escape it. All right, when a person deals with stress, and some stress of course is good because it helps us to get immune to the situations, to the challenges, and prepares us, it strengthens us, right. And then there is a prolonged stress. Whenever we are hit with stress, एक हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल. ओके, जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो ये अपनी सिस्टम को, जो अपनी इंटरनल सिस्टम है, जो इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, द एंडोक्रिन सिस्टम गेट्स अफेक्टेड. ओके, वो अफेक्ट हो जाती है, जिसके वजह से जो इम्पॉर्टेंट ब्रेन के केमिकल्स है जो प्रोड्यूस करते हैं इमोशंस, हैप्पी इमोशंस को या स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी को, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, राइट. एंड दैट इज़ द preliminary onset for any disorder, which can be depression, anxiety, anything. It is beginning. So awareness ये है कि जिस चीज़ को हम टाबू मानते हैं, today even though we are aware about mental health, still today people are very skeptical to go and talk or take help, take professional help. मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, जब भी आपको अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, यू कैन टेक फर्स्ट लाइन ऑफ हेल्प. इट कुड बी योर फैमिली मेम्बर यू ट्रस्ट, और अ वेरी क्लोज फ्रेंड you trust, or some guardian you trust, or some mentor you trust. Okay, बहुत important है कि you process what you're holding inside. आप process करो, you process it out, because that is the first step to save yourself from further complications. So this is an advice, to all who think it is taboo. Okay, ये जो first line of help आप ले सकते हो, it is free of charge, because people don't want to pay money for any kind of therapy, so it's free of charge. आज in our country and internationally, there are a lot of free resources available, lot of not-for-profit organizations who are providing mental health. So we can go ahead and take help. If you go ahead and take help, and if you take that first step, आप अपने आप को help कर रहे हो, you are helping yourself, saving yourself, and it is not as easy as it sounds. To know that okay, cortisol release होता है, it's all right, I'll deal with it. No, that is where we are wrong. When we don't take help,
our complications keep on growing, and we become totally helpless, paralyzed to help ourselves. So whatever the issues we face in life, there are some things we even can't share with our family members, friends, or people we know. Then the best part is to take a third party help. That will be an unbiased help, a professional help. So a professional can help you. So please, taking help is not a taboo. हेल्प लेना टाबू नहीं है, हेल्प लेना कमज़ोरी नहीं है. It is in fact your strength. It will transform into your strength. So on this mental health day, I would like to encourage everyone to take this message positively. And आज अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको ये मैसेज छू जाता है, do share it with others that take help, because that will save you a lot of trouble in the future. अगर आप ये हेल्प लेते हो तो आप अपने आप को ना ही डिसऑर्डर से बचाते हो, बट फिजिकल मैनिफेस्टेशन से भी बचाते हो, बिकॉज every kind of disorder then turns into physical manifestation, and it turns into a somatic disorder. So save yourself, okay? And once again, thank you for listening. Happy Mental Health Day to all, and I hope you can spread this message to your family, friends, etc.